और 22 दिन और एक्सटेंड हो गया, देखा ना बैटल पास। है। मतलब नाइस। एक्सटेंड ही किए जा रहे हैं ये लोग। अरे उन्हें 40 मिलियन पहुंचना है। बल्कि 22 से अच्छा तो 2 महीने कर देते भाई, ओ भाई लिच का मॉडल बहुत सेक्सी है। है ना। हाँ। ये क्या हो रहा है? यूट्यूब। लिच पे कभी डेसो बना के देखा है क्या? ओ भाई क्या डैमेज है। चेंज हुआ क्या? रायला वाला आइटम बेच नहीं सकते ना अपन। नहीं कमीने की यही बकचोदी है। बहुत हो गए मेरे पास ना, किसी को गिफ्ट कर सकते राइट। यप। ना। यूट्यूब यूट्यूब। हम्म। ओके। रेडी। कर रहा है, हाँ हाँ। कर। मेरे एक को एक कितने पे साथ नहीं खोल मिला था? सकते। मेरे को मालूम है रेयर कितने में मिला था पॉइंट? हाँ भैया। 16 पे। 16। लेट्स होप मेरे को भी मिले। नहीं नहीं, जब भगेल को इतने 10 में ही मिल जाएगा अल्ट्रा रेयर, तो भाई तेरे को तो है। मिलेगा। इस वाला नहीं, पहले वाले का। अच्छा। स्टार्ट कर। मैं रो देता अभी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ। हम्म। नहीं अभी उठाऊं। हाँ। हाँ हूँ ना। हाँ। भोपाल आया हुआ है। हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है ना, मेरे को जब भोपाल टच हो जाएगा तो मेरे को फ़ोन कर देना। वैसे तो मैं उठ ही जाता हूँ 6 बजे सुबह। बट इफ़ इन केस मैं नहीं उठता तो फ़ोन उठ जाएगा फिर। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। 11। हाँ रूटीन बिगड़ गया था, वो सुधार लिया मैंने। हाँ। पापा अभी टूर पे है, मम्मी बढ़िया। ठीक ठीक। मेरे को कॉल कर देना बस जब टच कर जाए भोपाल। ठीक है। ठीक है ना। हाँ हाँ। ठीक है।
हाँ हाँ ओके रेडी सेट ओपन भैया देख रहा हूँ स्टार्ट कर। देख देख रहा है, तेरे में भी यही हो रहा है ना? नहीं मैंने स्किप नहीं किया, यहाँ दिख जाता है आर्मरी में। अच्छा ओके गायरो ओपन अनदर स्किप करके दे, ओपना स्किप करके दे। हो रहा है तेरे में? हाँ भैया मेरे में नहीं हो रहा था skip। हाँ मेरे में नहीं हो रहा था। आ जाएगा, तेरा भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। दो साथ में आएंगे तेरे। अब अबे नहीं यू हो रहा नेवर skip, नो। अब नहीं हो रहा skip। देख अब एकदम से हो जाएगा, देख घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ये देख रहा है? ये क्या बकचोदी चल रही हाँ है? ये मेरे साथ नहीं हो रहा था, बहुत लैग है भाई, बहुत लैग है अभी। Skip, अब नहीं हो रहा skip। तो सब घूमेंगे, घूमते रह जाएंगे वो थोड़ी देर तक। मत कॉस्मिकली रेयर निकाल दे। अरे भाई हद है यार। अरे मिलेगा मिलेगा, थर्ड फोर्थ चांस में मिलता है उसका। भी पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं ना, लोग खोल रहे हैं तो उसके वो बढ़ते हैं ना। मिल जाएगा तेरे को। अरे हद है नहीं चीटिंग हो रही है मेरे साथ। अरे मिल जाएगा इसमें, नहीं तो नेक्स्ट वाले में मिल जाएगा 100%। इसमें नहीं तो अगले वाले में तो मिल ही जाएगा। कितने बच्चे हैं वो कहाँ से दिखता है? डन कर दे। 7 बचे 7 हैं अभी। है कितने लेवल्स इसमें? 6 इमोर्टल में 6 लेवल्स नहीं है। नहीं 50 50 50। हाँ 50 खोल। है ठीक है। एम्ब्लम ऑफ डिविनिटी दे दो। गायरो चलो भाई बधाई हो, आपको 50 पॉइंट मिल गए। खोलो अनदर। पूरा कल मिलेगा। दो साथ में मिल जाएंगे। अबे यार स्कैम है भैया ये। हद है। स्किप कर दे। रिएक्ट इतने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई ये इसमें। लास्ट है भाई, ये लास्ट है। मिल गया। बोला दो साथ में इसके मिलेंगे। साथ वो मिल गया क्लॉक। अब तेरे को एक वो मिल जाएगा, रेयर अल्ट्रा। नहीं मिला? हो गया ना? नहीं एक और बचा है। 2 बचे हैं। मिल जाएगा तेरे को, रेयर तो मिल ही जाएगा, अल्ट्रा रेयर मिल जाएगा। बाईस अरे लेवल तो और चाहिए तो एक और खुलेगा इमोर्टल। यूज कर ले। अप्लाई लेवल्स ओके। अब यहाँ जाके है थोड़ा बग्गी है गेम। वही बोल रहा हूँ। Today's theme is ये तो सबसे बड़ी स्कैम है कुतिया। You're embarrassing. विंड का भी मिल गया ना, आर का ना? हाँ मिल गया। एक ऑप्शन होना चाहिए क्लेम ऑल रिवॉर्ड्स। नहीं रे, फिर मजा नहीं आएगा। नहीं एक पॉइंट आ जाता है ना, उसके बाद पता है कि इमोर्टल से मिलने वाला है। अरे मेरे साथ और यश के साथ हुआ था जब हमने वो लिए थे ना 120 लेवल। हाँ, अरे भाई हाथ दुख गए थे हमारे भाई, तो उससे हाथ पहले दुख गए level थे। tag- फिर हमने अगले दिन किए थे भाई, पूरे एक दिन में नहीं किए भाई। कितने थे मालूम है?
170 130 कुछ अनलॉक करने थे। 240 दो बंडल लिए थे ना। हम्म, हाँ, उसमें से कम 170 वो थे। वही तो बोल रहा हूँ। 180 कुछ थे, 180 190 ऐसे कुछ थे। हम लोग ने वो किए थे उस टाइम। इतना लैगी था, हो ही नहीं रहे थे सर्वर। वो आ रहा था ओवरलोड का ऑप्शन आता ना, वो हाँ, बिजी बिजी वाला। मतलब ये बग नहीं करना, कल करेंगे आराम से। देखो ये एक और स्कैमर है। नहीं, इसमें भी तेरे को Let's पॉइंट्स spin the मिल जाए तो मजा आ wheel. जाएगा। अरे My उस turn दिन to say 25 it. 25 पे मिलता, मैं 700 पहुंच जाता आज। और का है ना What's in the world didn't see that coming. ठीक है, ये रंडी वाला वो अच्छा सेट है। तो करेगा क्या? अब तो तेरे पर अरकाना है। हाँ, वो भी है। और क्या बचा है? चलो वन भाई, गेम खेल लो, फिर मैं निकलूँ यार। वन मेरे को निकलना है अभी ना। हेलो। अपना मैच कर लेना इनफेमस। हाँ भैया। कर लेना अपना मैच। हाँ। भैया, पक निकल गई हम्म, एक और। पक दो हो मतलब? गए मेरे पास। इमोर्टल 1 खोला अभी, तो पक अच्छा, का इमोर्टल मिल गया, रेयर वाला। नाइस। अब तो वॉच दे दे, वॉच दे दे, किंग डन। अभी कौन सा है? 2। स्विंग। फ्लैट। मैंने 1 और 2 तो सारे रिसाइकल कर दिए। साइड शॉप गोल्ड के लिए। नहीं, वन। एक और ट्रेजर। 4 रिसाइकल करोगे तो एक ट्रेजर मिलता है। ओह। फिर लीजिए बट सब में कटा मेरा। भैया। एक बात बताऊं, वो रिसाइकल करना वर्थ नहीं है। हाँ, अब मेरे को भी लग रहा है बिल्कुल नहीं था मेरे लिए। मैंने सब कर दिया। क्या है? आ एक जाओ ये भाई है। खेलें। हाँ, शुरू कर ले। ये वाला भी ट्रेजर खोल ले, ग्रीन वाला। ये क्या है? ये तो मार्केटेबल है भैया। रायला, ये रायरा। रायला अरे, नहीं है। ये मेरे को उसमें से मिला। ये देखो, बैटल पास, साइड हाँ साइड शॉप। शॉप से मिलना ना, मेरे को भी मिले ये काफी सारे। यहाँ से मिला। ये 200 वाला। मेरे को भी यहीं से मिले। तो ये ये मार्केटेबल होता है? हाँ, ये तुरंत मार्केटेबल है। ऐसे मेरे को 300 रुपए के ड्रॉप मिल चुके हैं इसमें से। हम्म। एक 137 कुछ का था। वो ट्रेजर मैंने ओके। बीच में फोटो डाला था ना, पिक्चर्स में। हम्म। वो एक ये जो रखा हुआ है, और इसके अलावा भाई तीन किसी और। का ऐसा है क्या, किसी का डोटा नहीं खुल रहा नहीं, मेरा तो खुल गया। मैं तो साइड शॉप भी कर रहा हूँ। है? मैं तो लाइव स्ट्रीम पे कर रहा हूँ भाई, एमसी। ओपनिंग। आवर वाह। सर्वर आर बिजी बता रहा है। हाँ वो मैं गो कर पा रहा था, बट अब मैं डोटा ही नहीं खुल रहा मेरा तो। तो टर्न। रीस्टार्ट कर ले डोटा, हम भी चला जा। हम भी तेरे साथ साथ रीस्टार्ट कर लेता है। और क्या बचा है? जल्दी करो बे, मेरे को निकलना है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया? इंदौर। अरे रे। कब आओगे? कल। अरे भैया, आपके पास जकीरो मल्टीपल है ना? जकीरो जकीरो देखना पड़ेगा। देखो ना। देख तो एक मिनट। हाँ, हाँ, खुल गया मेरा एक मिनट। जब आपका ट्रेडेबल हो जाएगा तो मतलब ये अगले साल ट्रेडेबल होगा तब वापस ले लेना। हम्म। क्विक आइटम, क्विक आइटम, क्विक आइटम। उसका नहीं लेवल, वो ट्रेजर 1 का है ना? 2। T2 T2 वेब कहाँ गया T2? ये रहा। यस, सब पसी सब पसी सब दो है जकीरो। तो एक दे सकते हो। हाँ, मैं दे रहा हूँ तेरे को। ये ये एंड ऑफ बैटल पास सेल ले रहा है कोई? हम्म। तेरा नाम का अभी शगी ऑनलाइन नहीं है तू? आ, है, एक ये मिनट, रहा। एक मिनट।
भेज रहा हूँ। हाँ हाँ। भेज दिया भाई। आपका गेम ओवर वो स्टीम ओवरले में गेम अटकता है क्या? मेरा क्यों अटक रहा है? ओके थैंक यू। चलो फाइंड करें। चलो। छब्बीस सौ बीस में 120 लेवल। वही तो बोल रहा हूँ। तूने कितने में लिया? मैंने 120 लेवल लिए हैं भैया। 3000। 3750 1100 का डिफरेंस। वही तो बोल रहा हूँ, कट गया तेरा बेटा। From this battle, 5 seconds remain. अबे भाई मुझे दो इसकी स्ट्रीम। अच्छा हाँ, डिस्कॉर्ड की बंद कर, नहीं यूट्यूब की बंद कर देता हूँ। मैं आया। शैगी हाँ बस विंड निंजा लड़काना है ना? हाँ। अरे यार विंड निंजा बैन कर दी किसी ने, क्या बकचोदी है यार। एक मिनट, हाँ मेरा पीसी लैग हो रहा है तो मैं क्रोम बंद कर रहा हूँ। मिनिमाइज है मेरा। हम्म 10 seconds remain. 5 seconds. इनफ पेन उसने ले ली, अपन लेते हैं स्नाइपर। अरे भैया का पिक बाकी है। 10 seconds. 5 seconds remain. अरे इन्हें कॉल भी नहीं जाएगा। अबे रैंडम क्या हो गया? ये अपने आप रैंडम कैसे हो गई? टीना हो गई रैंडम। बहुत अरे देर वो से आपका पिक लिख नहीं टाइम किया पे है। ज्यादा निकल गया ना आगे। अरे यार, सुमित का फोन क्यों आया तुम्हें पास? वो कल भोपाल आ रहा है। क्यों? अभी मैं मैं तो हूं उसी ही से नहीं। तो बात कर रहा था। मैं हूं ही नहीं भोपाल में। भाई एक टैंगो दे दे मेरे। क्या? वो एसबीआई के किसी काम से आ रहा है अंकल वगैरह के साथ, तो उसने बोला कि अपन मिलेंगे, तू आ जाना, बरखेड़ा जाना है, वहाँ से फिर भैया से मिलने चल देंगे। मैंने बोला ठीक है। अब मेरे ध्यान से ही उतर Prepare गया for कि आज आप battle. निकल रहे हो। मिड विंटर वाइवन खेलूंगा मैं तो कल तक में। बहुत मस्त है भाई। अपने को क्या 30 करना है? seconds to battle. एंशिएंट क्रिप्स मारने हैं। चलो। मैं एक्शन कॉल पे हूं ना। हाँ बे। My spotter guides me. The stalwart will नमस्ते hold. अंकल जी। The weak will falter. जी 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 अंकल जी। अरे थैंक यू अंकल जी। अच्छा लगा आपको? बहुत। अरे वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। वही कल क्या, बहुत जगह लाइट भी गई, हम लोग के सेटअप में भी इशू आ रहा था क्योंकि मेरा आधा सेटअप लखनऊ भी गया हुआ था। पूरा यहाँ पे। थैंक यू। हाँ हाँ, क्योंकि बीच में क्या एक बार लाइट चली गई थी, फिर एक बार बीच में वहाँ लखनऊ में इंटरनेट चले गया था माया भगवान जी के यहाँ। हाँ तो उसके चक्कर में हम लोग को इशू हो गई थी। जी हाँ, पहले से बेटर है। थैंक यू। थैंक यू। ओके।
The crucible of greatness awaits. Time for target practice. Yes. अबे ये मेरा लीना फिजिकल देगी मैजिकल देगी मैं कुछ भी दे है तो दोनों ही है ना मेरा दोनों ही है। है तो मेरे दोनों चैनल To the secret shop. वाइपर आएगा नहीं लिच है ओ हो मैं पीएल का फार्म नहीं होने दूंगा। ओ नया इमॉर्टल लेके आया भाई थर्ड स्किल का है। Into the breach. चल वे कुत्ते के बच्चे पीछे Yes. और वो क्यों पॉज हो गया अपना वो कॉप DC डीसी मार गई। शैगी अब तो 150 टिप कर सकता है ना हाँ भैया लेकिन मेरे टिप खत्म हो गए नहीं। ये भी म्यूटेड हाँ है एक भाई बाउंटी बची है वो ले लेना मैं से। अपने साथ अपना जिनके साथ मैच है ना हाँ भैया हाँ वो भाई साहब वो कल खेली नहीं टीम कल उनका फॉरफिट हुआ है। नहीं उनने अपना शेड्यूल बदल दिया हरामी साले। अब देखेंगे कैसा उनका अगला मैच अपने साथ ही है डायरेक्ट तो अब अगर वो आज भी नहीं खेलते हैं तो क्या होगा? लीना पहली मैजिकल है ना पहली दूसरी तीनों मैजिकल है मतलब मेरे को जितना फिजिकल करना है राइट क्लिक से करना भाई डेसो बनाऊंगा क्या पागल हो क्या आज भी नहीं खेले वो लोग तो अच्छा ही फॉरफिट हो जाएगा एक और मैच। नहीं तो अरे नहीं तो कल डायरेक्ट हमारे साथ उनका भाई वही तो ऑर्गेनाइजर है A battle seeks resolution. Uh-huh. क्वीन ऑफ पेन के साथ Knife कौन hand. सा रोल खेल रहा हूँ? Going ballistic. सोचना भी नहीं ले मार दूंगा तेरे को कुत्ते के बच्चे Trick shot. Yes. अरे ये फ्री खड़ा है। First blood is on the ground, and we're already looking for more. Did you mean to do that? Go for that. Sniping. As you say. Of course. Spotted. मार दूं क्या लिच को मिड पे बोलो मारो। My aim is truer than ever. चूते आ गया मुझे क्यों बंद कर रहा था उसके अंदर मैं तो भाग जाऊंगा। तू क्या कर रहा है विंटर Sure is shooting. विंटर को उससे गोली में बंद कर रहा है चूतिया। Yeah. Run and gun. नहीं मारूंगा लौड़े के बाद तू मर I जाएगा। spotted direct. अरे मत मारा तू। Eat left. मैं बता रहा हूँ ये क्वीन ऑफ A पेन new फील्ड होने वाला है। trajectory. तो बोल रहे जिस तरीके से खेल रहा है ना भैया Skill वो sharpened. बहुत ज़्यादा खतरनाक Shrapnel. है। 2 लेवल का वाइपर Shoot 'em up. V1 का Spotted. बीच में चक्की में मैं पिस रहा हूँ। वे चूतिया है क्या? Quick draw. ले मार से डाटा मर गया। अब पास मत आइयो। Yeah. तो फुट के मैजिकल है मैंने। Center of mass.
trajectory. Of course. I leave this world of hurt. My poison works. It's magic. What are you doing, dude? Oh, more powder in my front. DC हो गया। Yeah. अरे भाई लिख ने मुझे मार दिया अल्टी लगा के भाई। लॉल। Yes. ओगर मिसिंग है भैया। My और उसको spotter रीजन भी मिली है भाई, iron. देख रहे हो किस्मत, देख रहे हो। मिड लिच नया मेटा। नहीं उस ऐसा नहीं है, मतलब उसने मेरे पे पहले अल्टी मारी, Uh-huh. तो गलत हो गया वीडियो मेरे साथ, तो स्कैम हो गया। तो क्वीन ऑफ पेन चाह क्या रही है? पहले बता। Guides me. Body shot. On. Not by a long shot. Money to burn. Ah, this will come in handy. सही है भाई, मैं आराम Your से लेन middle कर रहा हूँ tower कि ये is defending जंगल कर रहा है। itself. The diaglyph is now active. हाँ मेरे को भी वही करना पड़ने वाला है। Take this. अरे भाई इसका फार्म क्या हो रहा है लिच का एकदम से। टर्बो है भैया, एक बार उसने मारा गया, मिट गया। अपने Yes. Line of sight. कि नीचे मारोगे। Go at it. किल वाइपर। Fuck you. Into the breach. Haste. Ah, स्लो किया। Now. Run and gun. ओ क्वीन ऑफ पेन। गो। ओ नाइस क्रिस्टी, भैया मर गए। नाइस किया। Bloody murder. हाँ ये देख ऐसे ही मारा उसने मेरे को। ये अल्टी कहीं और चली गई, उसी में भी आ रहा हूँ नीचे रुक। चलो। अरे भागते रहे इधर, मेरे पास ही आते Save रहे। me. Missing top. हील मत लगाना, हील मत लगाना। नहीं नहीं लगाऊंगा। नाइस नाइस, थैंक यू। बस पीछे हो जा। मर गया। पीछे हो जा। वेल प्लेड। Radiant have fortified their वो structures. 3 लेवल मिले मुझे। हाँ 3 मिलते। Line of sight. आगे 4 मिलेगा तुझे बेटा। बढ़िया रोटेशन। वो कॉप ने देखा मेरे साथ क्या बदतमीजी करी। स्टील किया। भैया वो यहाँ खड़ी है, वाइपर यहाँ है, शार्पनेल यहाँ गिराई है, वो पीछे भाग रही है टियर 2 पे। Eat leg. हमारा पीएल को मरते देखना भैया, वो देखो तो You've lost the bottom tower. Gunpowder. पिटते हुए देख लो। कोई मेड को मारने आ रहा है क्या? हाँ अभी टीपी यूज किया है, आ रहा हूँ, चलते आ सकता हूँ। Oh, a few bullets more. मैं मार तो दूंगा। मैं अल्टी लगा के इनिशिएट कर सकता हूँ बोलो तो। कर ले, ऐसा कर ले। 7 सेकंड अरे बात टच भी है, रुकना। Uh-huh. क्वीन ऑफ पेन और मैं भी
Invisibility. जबकि जा रहा उसे हूँ। लेन करना चाहिए, मैं घूम रहा हूँ तो उल्टा हो रहा है। हट गया, मैं तो बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, इस पे लगा दे, इस पे लगा दे, अल्टी लगा दे, अल्टी लगा किसी पे। लगाया 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 इस पे। यहाँ बीच में लगा था क्रीप्स के वहाँ पे। देखो पता है, इधर देख के लगाना चाहिए था। यहाँ बॉर्डर है, सेंट्री भी है शायद, पता है उनको आप वहाँ हो। मेरे को अकेले को देख के थोड़ी भागेगा लिच। तूने आवाज करी ना इसलिए। Aha. Spotted. Oh, aha. डिफ्यूजल नहीं बना अभी तक। ग्लिमर है भाई तो। आ रहा है उससे। ये सपोर्ट बिल्ड की जा रहा है फिर अगर खेल रहा है तो। अल्टी मिस कर दी। Spot on. Shrapnel. You die. The enemy's middle tower has been destroyed. Easy shot. कर रहा हूँ पे। अच्छा बॉटल है क्या आप पे? A new trajectory. Money to burn. ये रख लो। अबे तो भेजा क्यों, यही तो खड़ा हूँ साले। मैं कैरी बिल्ड आऊँ या मैजिक, बोलो जल्दी बोलो। को जो मिशन करना है उस हिसाब से बिल्ड जाओ। अरे मिशन तो हो जाएगा भाई, जीतना भी तो है मुझे। बर्स्ट कर दो। कैरी बिल्ड मैजिकल चले से जाओ। बर्स्ट कर पाओगे आप। बर्स्ट करेंगे किसको बेटा? लेट गेम से लिच बर्स्ट होगा और कोई भी नहीं। लिच भी लेकिन अच्छा बिल्ड जा रहा है तो लिच भी बर्स्ट नहीं होगा। बर्स्ट नहीं, कैरी बिल्ड जाओ। नहीं बर्स्ट कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे किसी को। अबे एक बात बता, वो राइट क्लिक करेंगे किसे? ये बात किसको नहीं कर सकते? My सारे spotted डिसेबल है जो direct. बच के अच्छा चलो चलो, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, चलो मारो। Target practice paying off. इधर जाके मारा है ये लॉल। Quick draw. Going for The tower faces a terrible test. अरे आप बोल तो देते आप आ रहे हो, मैं बहुत पीछे था। तो लेन पे रहो ना ब्रो। मैं मर रहा था, हो गया। My spotter guides me. अरे उसको मारना, मेरे को क्यों मार रहा है? Spotted. लिच एग्स बना रहा है। उसका एग्स क्या करता है? Yeah. आईटी पे बाउंसेस बंद कर देता है। मतलब Double unlimited। damage. मार चुता है कि इसको मारते हैं ना, फ्री में बैठा हुआ है इतना आगे। My spotter. इसको भी मार सकते हैं लिच को। वाह वाह, अबे इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हेलो। नीचे 3 टीपी कर रहे हैं। अबे यार जीजी हो गया भाई मेरे साथ भाई। चढ़ गए तो ऊपर चढ़ गए। अबे तुम ओगरे को मारने के पीछे कैरी को छोड़ रहे हो यार। Spot on. क्या मेंटेलिटी The है enemy भाई। attacks your सब जंगल bottom करोगे tower. तो मैं पुश करूंगा क्या? A fistful of bullets. Yes.
उसकी हेल्प कर दो भाई, उसकी हेल्प कर दो। Mega kill. स्नाइपर अल्टी मार दे उसको। Yes? वह दिखे ही तो टस्क को मर ग्लिमर हो गया। भाई रेंज तो देखो उसकी। और चिड़ है मेरे पे ब्रो, और कुछ नहीं कर सकते। स्नाइपर पे अच्छी वाली। This is the real double kill. Your middle tower has fallen. कुछ नहीं हो सकता, गया भाई गेम। स्पेक्टर बीकेबी एमकेबी। The enemy attacks your middle tower. Dire structures are fortified. टॉर्चर लगा दे किसी एक पे। हील लगा, हील बाहर निकल वहां से। नहीं हो रहा, साइलेंस होना। तो तू उसके सेकंड सेल पे क्यों खड़ा है? मैं ध्यान स्पेक्टर पे था। Double kill. Double kill. मर गया। Let's have a go at it. रीजन उठा लो। Your bottom tower is under attack. मेरा तो फार्म ही ऐसा लग रहा है मर गया है। The breach. वो ही नहीं रहा मेरा फार्म। Yeah. As you say. Of course. Full bore. Center of mass. Steady up. On target. Of course. Sure is shooting. Eat lead. Line of sight. My spotter directs. Yeah. Come on, BN. The enemy's top tower falls to oblivion. I go out. क्या ही हेल्प करेगा वो पीएल अरे ये फाइट टावर नहीं। पुश करने के लिए मैंने जाना था टैंक किया। मैं पीछे से चला जाता कैसे मैं तो रहा था। Look to your bottom tower. Look to your bottom tower. मैं आ रहा हूँ। Sparks that may blaze into a skirmish. अरे राइट क्लिक में लास्ट हिट मिल गया भाई, सॉरी। The enemy attacks your top tower. ये और ये The shooting star returns. एक्स आ रहा हूँ ना। और बना लेता ना कि अब Your top tower is under attack. नेक्स्ट आइटम मैं बना लूंगा। Long has that tower stood against the rising tide. Uh-huh. ये ओरिजिनल टस्क है क्या? Shrapnel. Eat lead. ये इल्यूजन है। इतना कम राइट क्लिक था मैं स्टूडियो More powder in my shot. Snipe असली hunt. है। वॉर्ड तेरे पास है क्या? नहीं किसके पास है वॉर्ड? मेरे पास कॉप नहीं। कॉप लगा रही है। पीएल के पास है बे। Uh-huh. वो तो क्वीन ऑफ पेन पे बोलते हैं। Yes. है तो पीएल के पास।
Uh-huh. Yes. पीएल स्नाइपर फाइट हो जाओ जीत जाएंगे. My spotter बहुत direct. सही है हाँ. Line of sight. मंगवा रहा हूँ. नहीं जाना ही था मेरे को. Yeah. नहीं नहीं, अरे ये क्या है? शैडो ब्लेड भाई सभी शैडो ब्लेड बनाते हैं भाई, यही तो दिक्कत है भाई. इधर सबको फार्म जल्दी मिलता है, शैडो ब्लेड सब लेके पीछे खड़े हो जाएंगे. अल्टी लगा देना भाई, उठते से अल्टी लगा देना. वाह भाई. नहीं. Your middle tower can no longer be saved. कितने पे उन पे कितने और छड़े? वो भी Dire खत्म have fortified their structures against attack. Your middle tower is under attack. तू इतना आगे ना जा रहे, पीछे खड़े रहे. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Of course. Gunpowder justice. Dominating! As you say. पीएल थोड़ी भी कभी बनाता है. Spotted. मैं इसको बचाने मैं नहीं जा रहा आगे. A new trajectory. Your top tower is under attack. शैडो ब्लेड है तो मैं आगे भी नहीं निकल सकता तक. Yes. पे वही नहीं है, एस्केप ही नहीं है कुछ. Body Your shot. top tower is under attack. Spot on. तो फिर एस्केप बनाओ पहले. Snipe hunt. Your top tower has fallen. Yeah. Attack. तो मामा मैं क्या करूं? Full bore. Someone got a तो रखे रहने दो कहीं पे फिर. हाँ तो रखे रहने दो. पहले तो पंखा बंद मत करो यार बिना उनसे पूछे. Uh-huh. My spotter guides me. क्या बात है? पंखा चालू कर दो. Your top tower is under attack. साइलेंट दो. Is under मेरे को हील लगा दे भाई. killing spree. मर गई हो. मैं भाग रहा हूँ. Run and gun. Your bottom tower is under attack. यार टोम ले लो आपने क्या बना? Mm-hmm. तोड़ रहा हूँ. मैं तोड़ रहा हूँ. अरे कोई भी थोड़े सेंट्री वाले कोई पैसा मिलता है. नहीं वो उससे पैसे से नहीं As बट you आप मरो ना say. इसलिए. Full bore. We cannot be sure. ये देखो विजन है. Spotted. Shrapnel.
for death. My spotter ओहे guides me. पे लोटस ऑफ था Check it पता था out. ना, उसने पॉप कर दिया। Yes. अब लोटस नहीं है भैया, 20 सेकंड आएंगे। नहीं जल्दी आ जाएगा। हाँ इसलिए 20 सेकंड बोला। कितना है ड्यूरेशन लोटस का? 11 सेकंड उस पे तो ये है उसके पास। लिशा ऑफ पिंक हो रहा है। On. तभी तो बोला जल्दी आएगा। Got it. Yeah. आरएस चलो तो पकड़ के एटलीस्ट नहीं, इसको मारो ना, इसको मारो। हाँ भाई भाई Roshan is fallen to the ground. पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। मर गया बेचारा। अल्टी लगा दे विंटर, नाइस। पीछे भागा भी बच्चे, तुम मचा रही हो। Tower has been demolished. सील नहीं है मेरे पास। Killing spree. Double kill. Your middle barracks are under attack. Middle barracks has fallen. साले का ब्लिंक टेस्ट हुआ है भाई। Our brigade structures are fortified. गया, मर गया। अरे 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 भाई 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 भाई, ये क्या बदतमीजी है, ब्लिंक ब्लिंक करके मारता है भाई तो। हाँ ब्लिंक टाइगर क्रिस्टल टेस्ट हुआ है। ओ गए गए गए। बहुत ही लंबा। Is gone. चल मेरे को 2 मिनट दो, मैं आया है ना, 2 मिनट में। Where will the line be drawn? Your middle tower has fallen. इसमें से खींच लिया भाई। Your ancient demands defense. Who will back the tide? Your ancient is under attack. Do any dare data structures are fortified. Your ancient is under attack. Don't shoot. ये क्या है? वहाँ का विजन कैसे आ रहा है? Defend your ancient to the very end. To the radiant go the spoil. भाई वहां से कैसे खींचा इसने? There goes the whole. एक मिनट लिच का सेप्टर पढ़। शायद एरिया इफेक्ट हो जाता है थर्ड स्किल का, शायद। हाँ तो दोनों को खींच के रखेगा ना तो एरिया इफेक्टिव होगा। हाँ टारगेट एरिया। हाँ इसलिए खींचा। इतनी कास्ट रेंज है उसके पास कि उसने टारगेट एरिया में खींचा। मेरे को 3 बार तो स्पेक्टर ने मारा है। वाइपर को फीड किया है क्वीन ऑफ पेन ने। Our servers are busy. Please try again in a few moments. आई खायचं झालं काय? कशासाठी? मैं आया इन्फॉर्मस 2 मिनट में।
दरवाजा बंद कर दो। फाइंड करे। वीडियो पे तो अंदर। अच्छा तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। हेलो। आ गए? हाँ चल जल्दी से खेलो और अच्छे पिक उठाना भाई। बस शागी भाई तेरे लिए है। भाई मेरा तो अच्छा था, मैं दे रहा था डैमेज। खराब भाई। क्या है? हाँ It is your ban. 5 seconds. साधावरण आणि भात आहे गरम भात बनवताना मीठ घातलं होतं. अरे यार. शागी हाँ बोल. स्वैप कर. इसमें नहीं होता शायद होता है. होता है? हाँ. क्या खेलना तेरे को विंड? यप मिड नहीं खेल रहा मैं बट हैं? अबे आपको मिड तूने विंड उठाई है तो अब वो ये होगा ना. स्वैप करना है यहाँ पे. पहले मेरे तूने क्यों उठाई? वही तो. अरे तो शागी कुछ उठाएगा तो स्वैप हो जाएगा ना. शागी को जो चाहिए उठा ले स्वैप हो जाएगा. बट तेरा लोड आउट मेरे में आएगा. यहाँ स्वैप करेंगे तो तू अपना लोड आउट ला सकता है फिर वहां पे मेरा लोड आउट आएगा. ट्राई कर लो. ठीक है भाई कर ले ट्राई. जल्दी स्वैप कर. अरे यार इसमें व्यूज उठा ले. नहीं आ रहा मेरे को. तेरे को स्वैप करना आता है? यस. अबे जब सब उठा लेंगे तब आएगा. इतना गवार मत समझ. तेरे अगर ज्यादा टाइम खेला है तो सारी चीजें पता है गेम की. अब हो जाएगा. ये उठाएगा ना जैसे ही अपना वाला बंदा. यार इनफेमस तो 5 seconds. वो तो जब ये होगा तभी आएगा ना. पिक कर भी रहा है या नहीं? अब कर स्वैप. अब लगा अपना लोड आउट जल्दी. अरे यार मैंने गलत पिक उठा लिया मालूम. क्यों क्या हुआ? व्यूज से काम है. शेर पे बैठ के गाय की आवाज आ रही है एकदम मस्त. ला दे अब. कैसे स्वैप करते हैं फिर से? अब अगर मैं खेलता हूँ विंड रेंजर तो मेरा आर्काना प्रोग्रेस होगा ना भैया. नहीं होगा. पिक मैंने किया था. नहीं होगा. क्यों? पिक मैंने किया था ना क्योंकि पिक इसका है ना बेटा. इसी को तो लेजिट स्कैम बोलते हैं डोटा का. ये देखो भैया कचरा सेट मेरे को पकड़ा दिया है इसने मेरा नाका. कचरा सेट है इसमें कुछ नहीं है. मेरा इतना प्यारा रायला से एक अच्छा मिला है मेरे को. वो उससे भी नहीं खेलने दिया. जबकि दिखा रहा है पता है लोड आउट में. मैं रायला खोल रहा हूँ. मैंने अभी 2 T1 भी खोले. अब रायला खोलूंगा. रायला सुलझा सिम आरकाना. वही पिए के बाद आरकाना है. What? 10 players compete for ultimate. भाई मजाक मत करो. मजाक कर रहे हो. कुत्ते की आएगी बारात लगेली होगी रात उसमें रायला होगी. उसमें रायला होगी. ये ले लेना भैया. होगी. जब बाटली आ जाए तो वो ले लेना. मेरी माँ सोच रही पागल कुत्ते ने काट दिया मेरे बच्चे को.
Tuck your tail and run, Max. ओहो भाई ये तो बोल। ओए अरे होए यार होए साइकिल होए। पर डस्ट मिस हो गया भाई, गांड में कहीं भागो। Startle. ओए होए होए। सावन में लग गई हाँ के दिल मेरा स्वाहा। सुन महीना पागल दीवाना। देखो भैया, मेरे ही अरकाना से मेरे को खेलने का मौका नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं बेटा। Of course. जूस इतना चालू था, इतना चालू जूस था। Since you command it, time on. अरे अरे मैंगो, अरे अरे मैंगो, अरे मैंगो। Good idea. अरे क्या है ये वो? Good idea. On the prowl. सारा ने मरवा दिया उसको भाई। Run like the dogs you are. Start. Get back. The inner light dawns. अरे ये बच गया वो, हट। Yes. अब वो देगा भैया एबिलिटीज। ये कौन है? होगा कोई लंगू। फिलाइट। ऐसा है। At last. Perfect. We can kill him. अरे बच गया। गो स्लाडर। हो जाएंगी। Cringe you. Hey yo. Structures are fortified. और यार कैसन बा? I don't have jump. Agreed. Oh, that's awesome. Have jump at that time. As you will it. भाई ये जूस तो पागल वागल हो गया भाई। 5-6 मैंगो ला ला भाई हर बार। इनफेमस के माइक से यार की आवाज क्यों आ रही है? मेरे माइक से थोड़ी आएगी। What the fuck? आप लोग ये टूर्नामेंट का क्या हुआ? अभी एक मैच जीते हैं, अभी एक और है। नीचे मारोगे, नीचे मारोगे, नीचे मारोगे। ऊपर देखो। स्लाडर मे बी नॉट। और क्या था? Power be thrown. ओ जी। ओ भाई पड़ी। Good idea. कुछ प्राइस है? चीटियों का। 8,000 मिलेंगे। अरे भैया क्रीप पे सामने स्टन भी नहीं मार। 5,000 फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस। Oh. That which protects also requires protection. I come and I command. तो लाइक घर पे खेलते हो ना? भैया देखना 12 आ गया है। तुम लोग कैसे लोग हो भाई? Forward by आप bow. सब छोड़ के चले गए हो। We ride. मनुष्य टीम है भाई, मनुष्य। Yes. This should make my life easier. Never refuse gold. Yes. On the prowl. To the battle.
Of course. बॉटम मिसिंग बॉटम आ गया Since you command it. Leap forward. We ride in ये देखो वो आ रहा है 12 Agreed. Shaved in searing heat. Since you command it. अरे नहीं लगा मुड़ गया वो Evil curse. मेरे को बचा लो सही बोल रहा हूँ मुझे बचा लो वही ट्राई कर रहा हूँ As you will. You feel the red. ये बैटल फ्यूरी क्यों बना रही है टर्बो में नहीं बता सकता भाई और Killing spree. What is this? मैं फोर्स स्टाफ बना रहा हूँ अपलोड के एलएस को हटाने के लिए। On track. टर्बो में कौन बैटल फ्यूरी बना बैटल फ्यूरी क्यों बना रही है ये Of course. Start. अभी तक डेसो ले आती वो डेसो भी आ जाता काफी हद तक बीकेबी का वो भी आ जाता ओवर है एमपी बना रहा है ये Forward by 12 का चार्ज है कहीं पे 12 का चार्ज नहीं बचने के लिए किया है वो Leap forward. Found me. क्या साला Good idea. The enemy's top tower. भाई इसको मार देना एरो Regeneration. किसको आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ ओबे वो जा रहा है रूम के लिए We ride. To the Radiant battle. structures are fortified. अल्टी है मेरा ना मार देना हाँ मैंने लगा दिया अभी कूल डाउन से हटी 1 सेकंड भाई फिर भी इसको देख पा रहे हैं कैसे अच्छा नहीं देख पा Power रहे of Gorath. बीए को बैट को ऑन इंटरबो Forward, एलएस पे pet. पड़ा था एरो Your middle tower Leap faces a forward. terrible test. The diaglyph is now active. उनका लाइनअप सही में बहुत अच्छा है Fair warning. Your Especially head turbo. has arrived. ये इसका फोर्स स्टाफ का अलग एनिमेशन है Top tower. ओ भाई स्लाइड करती है वो देखो वो जा रही है फिर बैठने 12 से 12 के अंदर एलएस हो सकता है There is nothing left of हाँ the एलएस top tower. अब नहीं It's not magic. On the Just an prowl. old-fashioned skill. अरे ये देख You were out of your Agreed. depth. मिड रोटेट कर देखते हैं कुछ रीजन Since you command it. बस आके शैकल दे उसे और अपन कनेक्टिंग स्टन देते हैं उन्हें क्या करता हूँ Forward, pet. दिखे तो थोड़ा देता हूँ ऐसा कर Of course. एलएस यहाँ था नहीं वहाँ नहीं है नहीं मार पाओगे ओ भाग आते रहे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था Such power is ours. On track. लेकिन अबे फसाकल मिस हो गया We ride. अल्टी 17 सेकंड मेरा फोकस फायर आप है
Captured in the play. I'm under attack. To the battle. Perfect. पड़ी है 12 में पड़ी Whimper. इतना आगे क्यों कमिट कर गए? मैंने बस कर दिया था बड़े तो आगे मत जाओ, पागल हो क्या? भैया मैंने यहाँ से एरो फेंका था वो लग गया 12 में तो ये कूद ही गए उस पे As you will it. The rune of regeneration. Good Your idea. middle tower is defending itself. मैंने Dire इनिशिएशन have fortified their structures against attack. Good idea. भाई टच था मेरा The enemy attacks your middle tower. LS इसके अंदर LS है। There's no more. यहाँ LS है। LS और 12 है। Since you command. Middle tower is under attack. I was just throwing the arrow Dire structures are fortified. बहुत फार्म है भाई। We ride. Bottom tower is under attack. क्या विजन है I am snared in The enemy साइकिल attacks your bottom tower. साइकिल नहीं है अभी मेरे पास। मेरे को तो बचा लो। मैना कुछ नहीं है, थोड़ा पीछे था। Strength shall be ours. ना हो दिक्कत नहीं है उसको। ये भी मरता है भाई मैं कैसे, तुम्हें देखा था 2 बार पोस्ट ऑफ किया आपको। मैना भाई। क्या मिल जाती है। तरफ मूव कर जाओ अरे नहीं, मैं बेस ही जा रहा हूँ ना। सूस की अल्टी से बचाना है सूसल्टी दे चुका है। Your middle Forward tower by bound. faces a terrible test. बस निम्बस भी आ चुका है। Good बस कब idea. आया रे यहाँ आया तो था, भैया के लिए आया था। Yes. Starfall. Do I have to transition to core? Fair Hitters कौन है warning. अब तो बस Your ये death एम्बर। has arrived. नहीं, मेल स्टॉर्म ले लेता हूँ। As you will it. बस साले Yes. मैं क्या डेसो वैसो बना लूँ? डेसो है ना, पीए है ना। ये ने बनाया है? कहाँ बनाया है? लाइट स्टोन तो लिया है, नेवर माइंड। वो जा रही है, बीके भी पहले जा रही है वो। तो मैं फिर डेडलेस चले जाता हूँ, ठीक है? Leap forward. Stars. आइटम कमी है मैं पैसा ड्रॉप करूँ वार्ड के लिए? नहीं नहीं वार्ड अगर है तो ड्रॉप कर दूँ। मैं तो वैसे कायदे से उसे डेसो जाना चाहिए था। वो बीके भी गई है, ठीक है, बीके भी खराब नहीं है, ट्रोल है सामने। Scatter while you can. ओ भाई, On the prowl. ये ट्रोल असली है इल्यूजन है? इल्यूजन है। Yes. 12 का चार्ज है मेरा ना तो। उसकी अल्टी फॉलो अप है ना, तो बनाना की अल्टी यूजलेस हो जाएगी उसमें। ये असली ट्रोल है क्या? नहीं। Leap to it. यहाँ वार्ड है।
यहाँ एक बार वार्ड लगाना शागी। अपन ने से टॉप टावर लिया अभी। शागी एफके है क्या? Forward. भाई 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 ये क्या क्या हुआ? टैक्सी चल रही है भाई। To वो तो the दिखे भी battle. नहीं इतनी देर में डिलीट होगा जैसे ही मैप पे नीचे देखा। एक तो उसके कंटिन्यू बैश भाई। वो तो बीके के थ्रू जाते हैं इसके वाले बैच तो। क्या फार्म में Yes. चल रहा है यार। पीए के पास आ गया डेसो। अबे डेसो पीए गो डेसो डूड बिल्ड डेसो। छोड़ असॉल्ट बना रही है ये। We ride. वाह क्यों? ठीक है, राइट क्लिक खेलना है उसे, पूरा राइट क्लिक खेलेगी वो। Forward by bounds. Sladder can go assault. You have Deso. अबे मैं जाके देख के आता हूँ क्या सीन है। पावर शॉट मार दे। Bullseye. अबे चलो चलो चलो। कितना बचा है? अल्टी मार दे, अल्टी मार दे। Bring down. Being snared in fire. उसका सल्टी नहीं है। ये यार मैंने स्टन भी दे दिया था फिर से। हाँ बट अब ऐसा लेना उस पे यार। I'm under attack. मर गया, ये भी मर गया ब्रो। Vigilance. Cover before us. हाँ बस हो गया के लास्ट। बावजूद डैमेज नहीं था इसलिए मरा नहीं वो। उसका निकालना है ना। It's time. To the battle. Your middle tower is under attack. They seek an advantage. Your middle tower has fallen. Leap forward. Get. Wait. On the prowl. अबे Since you command it. चलो स्टन ना दे। ये इसके अंदर है सर। Fortified their structures against attack. Killing spree. Double kill. Your tower faces a terrible test. और तुझे पता है मेरा विंड्रन ऑन था। Good idea. Your middle वही tower तो। can no longer be saved. Look now to your middle barracks. दोनों एमके भी बनाया है। Yes. Stop. Your middle barracks are under भैया बताओ। spree. यार ये क्या पैसे है यार। तो अगर मैं होता तो ये मर जाता। Your middle barracks has fallen. Mega kill! Double kill! Barracks has fallen. A single misstep can bring all to ruin. भाई वो 28 लेवल का मेरे आगे जाने में गांड पड़ रही है। अरे Your middle tower is under attack. ये क्या है इसकी अटैक एपिसल की रेंज पे? चले पानी देते का यहाँ वार्ड लगाओ यार। मैं आ रहा हूँ, लगाता हूँ। You'll
not stop us ये देखो now. यहाँ वॉल ला के रखी है रामपुर में। Your bottom tower is under attack. भाई रिफ्रेशर ये Wicked tower is under attack. Your bottom tower has fallen. आउच। Forward, pet. मर जाऊं मैं बोल। कोई मरे उनमें से कोई नहीं मरेगा भैया। स्कार्डी अभी से रेंज लेके घूम रहा है वो। Tower has fallen. Your top tower is under attack. Not Your ready. top tower has fallen. Look now to your bottom barracks. Perfect. ये भाई लगा पियर का। ओ भाई Monster kill. Your bottom barracks are double kill. अल्टी I don't know what we're seeing. मरेगा क्या ये? अभी मैंने अल्टी देख के रखी थी, उसके बाद कैसे दिख रहा है उसे? Your bottom barracks are under attack. अब चीज भी खा गया राम को। Your bottom barracks stands no more. चलो मैं जाता हूँ है ना, तुम लोग चलो। Your middle tower is under attack. Your middle tower Back. has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your top barracks has अरे fallen. बाहर तो निकल, निम्बस में ही मर जाएगा तू। Ancient. ए वो नहीं मर रहा। Has fallen. नहीं नहीं ये क्या गोल है भाई? There can be no forgiveness. कोशिंबीर घेऊन ये. नाही पण पोळी नाही खाते मी. तर तेवढी तो संपून जाईल भाजी आणि हो. Our servers are busy. साइड शॉप में ना? नहीं, बैटल पास के पेज पे. क्या तो सही चल रहा है। चल मेरा भी रहा है, बस जैसे ही तू बैटल पास पे प्रीव्यू पास करेगा ना तो वो लिख के आ जाता है। वही तो कर रहा हूँ। चलो ये जो टावर्स मिल रहे हैं आपको टेरेन वाले, ड्रैगन वाले, हाँ वो हमेशा रहेंगे? हाँ और इनको खरीद सकते हैं क्या बाद में? नो चलो चलो आप जा रहे हो ना वीडियो भैया? सेफ जर्नी। थैंक दिक्कत हो तो यू। बताना। कब तक कल आओगे ना? 10 बजे से पहले आ जाओगे ना? यस माय वे। ओके चलो मैं भी चलता हूँ। टाटा गाइस। ओके। ओके तो क्या शाम को पहुंचोगे वापस यहाँ पे? वो 4 बजे मिलने का बोल रहा है 7 नंबर पे, और फिर बोल रहा था 5:30-6 बजे चलेंगे भैया से मिलने। देखते मैं कब आता हूँ बेटा। एक तो वही है ना, वो इन्फॉर्म भी तो करके नहीं आता।
आज आ रहा है? क्या कल आ रहा है वो? मैं तो कल तक शायद आ जाऊंगा। उसने बोला 11 बजे फ्री रहेगा क्या, तो मैंने हाँ बोला, तब पता है उसने कि कल आ रहा हूँ तो 7 नंबर पे मिल जाना। ठीक है। ट्रेजर अच्छा, ट्रिएंट की अल्टी का आया है ये। कायरो का स्टन। चल जा रहा है ना, टेक के। इंटरनेशनल 10, ड्रीम लीग 13। Dire's bottom tower is no more. Radiant's middle tower is under attack. Structures are fortified. I don't know what we're seeing! Unbelievable! Bear witness! Double kill! Your tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is no more. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Holy shit! Radiant's middle tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is no more. Radiant's bottom barracks are under attack.
Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks has fallen. Rogue Knight claims another. Radiant's middle tower is under attack. Holy shit! Dire's bottom tower is under attack. Double kill! Tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Double kill! The Witness tower is under attack. One can only marvel at the spectacle. Double kill! Red's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's Ancient is under attack. Dire's top tower is under attack. Is the Radiant Ancient about to fall?
5 seconds. It's like, oh my god. If any player had to miss that, this turns into a double kill the other way, but he's consistent, right? He sets up those massive plays for OG, so we will talk about him, we will watch him. We will really, really watch him, and we will also do so very, very soon. I know you guys have been waiting for a while to get this started, and it is finally time for the grand finals of the International 2019. It is Radiant's ban. Dire's turn to ban. Radiant's turn to ban. Ladies and gentlemen, welcome. That's right. It's OG versus Team Liquid Grand Finals International 2019. And I hope you're in it for the long haul because this is a best of 5 series. First team to take 3 games will win this entire tournament. As you saw earlier, I'm joined here by Gunnar and Febby. And as they had briefly mentioned on the panel, this is 2 European teams. And this is the first time that 2 teams from the same region have been competing in TI Grand Finals since 2014, which it was VG Gaming and Newbie. So I want to ask you really quickly, as we are soon getting into this draft, what's it like playing another team for your region, and what's like the scrim culture? Because obviously, when someone's very close to you geographically, it makes sense to play them frequently in scrims. So, what kind of information do you get during scrims? Are you more trying to figure out what you're good at, or are you trying to figure out what the enemy team is bad at? You're trying to figure out new strats. You're trying to play heroes. What exactly do teams get by doing scrims? Well, a lot of the times in tournaments, whenever same region teams play each other, you'll see that there's like upsets, right? Where it's like this really strong team, they could be like top 6, top 4, whatever, is getting knocked out by, you know, like maybe a top 12 team or something like that from their same region. And it's because they play each other, like you said, a lot, right? They know their strats, they know the way they like to draft, they know the players, especially from pubs. Like you play the pubs with some player, you know, this guy likes to pick these type of heroes, he likes to kind of make this stuff around the map, and sure, it's not in a competitive as like, you know, aspect all times, but you get a feel for all the players. So that's why a lot of the times, like here, I'm expecting to see the games be like a little closer than OG's like normal run, right? Right. And Liquid are doing a good job to make sure that doesn't happen, as we see in the first phase bans already taking away a lot of the things that OG have been proving to be extremely powerful on: the IO, the Magnus, and the Alchemist. And but OG do get Enchantress. They do. Which 10 seconds. They're probably like the best Enchantress team right now because they play 5. 5 seconds. So if you try to like super hard counter this Enchantress, you know, you pick some like a Light Stealer or Gyro. These are like okay counters, but you pick some hard counters at the edge and they put it on no tail and then call it a day. Give Seb a new hero. Is Chen one of those heroes? Because I know back in the day when both these heroes used to be all about getting neutral creeps, it seemed that there was a real give and take between Enchantress and Chen. Both these heroes have kind of changed their role, Febby. Why exactly do you think Liquid goes for the Chen to respond to this Enchantress? I think they're looking to group up early and push early and just like have a better early to mid team fight. I think that's what they're thinking right now, especially with the Tide pickup as well. Also, both heroes in the early game have changed their playstyle a lot. It used to be Enchantress would go for enchant a lot. And she'd get a creep, you know, the Wildkin, she'd have a little more bonus armor, she'd have Tornado, and that would be like her lane support, right? And now she's more getting heal and untouchable, and she's kind of just right-clicking your carry. And Chen, on the other hand, he has his new passive ability. I guess it's not a passive anymore, right? It's got a passive component and an active component. Active, yeah, so but the Divine Favor gives the aura, and then obviously the active teleports you around the map. So the active or the passive gives you everyone HP regen in an area, and increases the HP regen by percentage. So now a lot of the Chen, you'll see they buy a headdress, which also gives everyone bonus 2 HP regen. So now everyone from level 1 in Chen's lane is going to have like 5 HP regen. When they pair it with a hero like Tide Hunter, that guy doesn't take damage. So they can kind of match these lanes up, the 2 from Liquid, put them in any hard lane, and they're going to get a lot out of it. I want to talk about like the meta a little bit in TI because I played in I think 3 or 4 TIs. I think it was 3, and I've been watching other TIs as well. So the meta shifts twice in TI. Once is after the group stage ends and when the what is this called? The main event. The main event starts. Like a lot of teams like take like those few days. Especially during the 1 day break, right? There's a day break between the groups and the main stage. Yeah, they study everything and they decide like what's really good in the meta. And we've been kind of seeing tiny void popping up in the main stage. And at the grand finals, meta shifts again. The first game kind of doesn't matter. It feels good if you win.
But I think like Liquid from the first bans, from the first pick bans, because that's like the most important, because that actually shifts your pick, the whole pick ban. So I think this is going to be a really important match to see if they are able to actually beat OG's Enchantress, because it's going to give them a huge edge if they win this, if they are able to beat the Enchantress, because they can play it themselves too. It's also kind of crazy if you look at this, that OG gets first pick, right, this game? And look at their bans compared to Liquid bans. Liquid has to ban like 3 of these like game-winning cores, right? Yeah. And OG gets to pick, you know, they ban this AA, so it's like it forces you to ban the AUG. That's what I was getting into. Like OG has a lot of heroes that Liquid needs to first ban. Meanwhile, it's not the same for the others. So yeah. Yeah, bans against Liquid seems to be more targeted towards Miracle during the ending phases of the draft, because usually you got to be worried about these random anti-mages coming out or something like that. You're not concerned about that happening in the first phase of the draft, so you're just kind of trying to establish your strategy. So for these two teams specifically, as we see a Rubik come out for Liquid, do you think it's more in Liquid's, like the ball is in Liquid's court to kind of figure out what OG is up to, and OG's just like, we're just going to play our own Dota. If you can beat it, then we'll maybe start sweating for game 2, but for right now, you got to prove that you can even take one game off of us. OG right now, they looked at Dota buff. They searched TI9, looked at the heroes from the main event, saw the highest win percentages and pick rates, and clicked the top 3. These seem like good heroes. And they're hoping that they're going to work together and win them a game of Dota. Okay. And Liquid is doing their own style, right? Yes. Like this TA is Weeha's hero ever since he joined Liquid. Even before Liquid, he would play like on Chaos, he'd play a lot. But they first picked it the entire time last major. They started first picking it last series. I think it's like their comfort way of playing. It gives them map vision, it gives them a, like almost always a 50-50 lane at worst. Yeah. Even if it's like horrible, you can go jungle like in the Huskar lane, right? You can just jungle, catch up, and come back in the mid lane. I think right now OG is thinking of picking Void or not. Like they're taking their time, because this pick is going to kind of determine their win condition. I think they're wondering about, they probably saw the last match, right, which was a Void versus TA. Yes. And they saw how that probably panned out, how the TA just like, you know, 3-shot the Void, you can't get time walk off, doesn't really matter. So they're probably considering if they're actually going to be scared of this TA and they need to pick, you know, more of a safer carry against the TA, like a Spectre. They're going to go for a hard carry option, but one that obviously is very, very strong against TA. Once the Spectre gets that Radiance online, suddenly TA's refraction is just completely nullified pretty much. Also, Spectre's a common Manta buyer. That's one of the things you want on an Agi hero versus TA. It serves 2 functions. You can dodge or move the Meld Strike, and also it burns the refraction instantly, because you have 3 different heroes. It is not a carry hero that we see much here at TI9, but it is really amazing against Liquid supports right now. Those 2 squishy, the single target supports, the backline supports. It's really easy for the Spectre to go on Liquid's backline right now. So the cool thing about Spectre this tournament is people are like doubling down on the late game on it. They go Midas on Spectre as their first item. But what about the days of the old Vanguard Spectre where you're just like, no, I'll be able to make it to the late game. You're like, listen, either win or lose, this Spectre is going to get super farmed. It's up to you to end the game, and they were going Midas? Yeah, it's like a lot of carries are going more, you have to get a lot out of the map these days, right? That's why these heroes like Alchemist and Meepo, like for Liquid, right? That's their Meepo. Like these, even Arcward, these heroes get more gold out of their gold. Right. Alchemist just gets double the gold from last hits. Arcward gets double the gold from Midas. Having, well, double Midas, but also in team fights he has 2 sets of items. True. Meepo gets 4 times the stats, right? So they have a lot of like functions that, since these teams playing the map so well these days, and they can't really like, you know, force people away from the map, that stuff like that is just really strong. These heroes from Liquid side, it's really familiar too. I remember it punishing the Raise King draft. These heroes want to play fast, and that's what Spectre is kind of scared about. So laning phase is really important for both sides, because if Liquid gets to win, then they're just going to start snowballing. OG last ban a Gyro and then pick up a Pugna. So I think that's going to be a mid Pugna versus TA. The matchup's a lot better now than it has been, and even when the Pugna at 6, the TA has a really hard time laning against him. And they'll probably try to lane this tiny top, I guess. I think the tiny top's a little safer than the Pugna, but they can always swap the lanes around based on this last pick from Liquid. I was thinking Liquid's gonna pick a hero like Troll to amplify the early mid game, but because of the Pugna pick, it can get kited real well, so
Oh, So Liquid want to take that Spectre game to the next level. Another hero that can quickly amplify his own farm. Meepo, the last pick on Team Liquid. That pushes TA to safe lane, I guess? Yes. It's a very early, fast tempo. Spectre's not going to have a lot of room to breathe. It's pretty good late game, so yeah, it looks like a really good last pick. So then does this change the side lane Liquid situation for OG? Like, are you going to move the Tiny around or the Elder Titan around elsewhere? Because you still got a Spectre that you got to babysit. Probably not. The thing that's kind of scary for Liquid is OG has an ET, right? And ET is so good against Meepo. Yes. You get Astro Hero damage from each Meepo. You get the aura on all the Meepos. You can stomp all the Meepos. They're always going to be clumped. You're always in these big team fights. So that's the one big question I have about this Meepo pick. And Elder Titan is a hero that we've been seeing a lot of strength of just in the laning phase. Even before the multiple Meepos come online or something like that, he's going to be getting a ton of damage from that Astral Spirit. Yeah, but yeah, individually you're right, but I think the way these heroes work together right now, Liquid's heroes, they all complement each other in the early mid game. So it's gonna be pretty hard if they win the if OG loses the lanes. The lanes are really important this game. All right then, let's hear some of the justification from Team Liquid's coach, Roman. Thank you very much, KC, and welcome everyone to the 2019 Grand Finals, a best of 5 between Team Liquid and OG. I'm only Pixel here with Fog. We've just seen the draft. It's all very exciting, right? We have Liquid, they raise up the TA, then out comes the Pugner, and then they say, well, we're going to switch it around. We're going to bring out the Meepo, but, and there's a big but, right, Fog? There's something kind of good on OG's side. There is a good Elder Titan pick for that Meepo. This should be a really interesting one. We look at OG, like you said, this is what happens when we get to the later stages, and of course in the finals of TI. It's all about counter picks and just mind games. Like you said, they just swap the lanes around immediately just from the picks. And even though you don't see too often that these swaps happen, it's gonna be those mind games. Because immediately, look who's actually playing the Meepo, and look at his items. Those aren't mid items on our Meepo. Those are side lane item Meepos. So that's already a big change up there. Yes. They're going to be seeing the player. They're going to be Weehaws playing Meepo. Of course it's going to be mid. So now we're going to see if they can actually scout the lane. Weehaws just going to hide. He has to hide this to make sure that OG does get caught off guard guarded. And talk to me about this then. The Elder Titan, a hero that we've seen a lot of drafts where for other reasons there could have been the reason to pick the Meepo, but it hasn't come out. What makes this hero so scary for the Meepos out there? A lot of the times, of course, you get that big amount of damage that can work for Astro, but it's a 5 position. I think the bigger thing as a 5 position versus that Meepo is you're amplifying everybody else versus him, and you're stunning multiple Meepos. Sure, he's not going to be stacking all 5 of them all the time, or all 3 or 4 of them at the same time, all 3 of them, whatever, in those situations when he does have them, but it's the likeliness that you're getting multiple Meepo stomps is very, very high. We're going to see both teams come out to try and get a look at getting the advantage in the runes, and it will be Liquid able to take 3 bounty runes to start the game off. Lanes are identified immediately. OG's going to play super aggressive down bottom. They know it's a Meepo in the side lane. They're just going to constantly be running at him, and now it's going to be Miracle in that matchup mid versus a Tiny. Yeah, interesting to see, especially after, as the panel were mentioning earlier, how Weehaw and Miracle were sort of juggled around back in the day on Balkan Bears between the mid lane, and now here on the same team, Miracle says it's my turn to take myself back to mid. I'm really curious to the side lane to see how the side lane Meepo is going to do. We pretty much strictly see this hero placed in the mid lane because you need experience. You want to be getting that solo experience for yourself, being able to always... Oh, so you actually going to get a tops back, tops, and he actually has the tree grab as well as the avalanche, but put some pressure on. But yeah, this Meepo is going to be splitting experience with the Chen, so I think we're going to see Kuroki in particular moving away from the lane a lot as the Chen. You have to give Meepo levels.
And looking at the other side, lane up top, mind control tied, backed up by GH against Notail and Anna. Is this is a lane where Anna's going to be able to get some space to farm, or can Liquid really amp up the pressure on a Spectre early on? I think Anna's going to be able to farm up here just fine. They could get set up some kills onto Notail, but onto Anna, I don't think you can kill Spectre with a Rubik and a Tidehunter. You can prevent some farm though, right? This is the damage reduction lane. Fade Bolt as well as Anchor Smash will be a little annoying, but this is what Elden Titan does. This is why he's picked so often. He just runs the heroes down. Yeah, he just secures the lane pretty nicely for refreshing the spirit here, nearly getting GH. Single-handedly just beating these two far away from Anna, so Anna's got all the space in the world. Yeah. Let's have a look on the mid lane. CS 7 for 3, Topson at the moment against the 4 for 0. I guess what expected, Tiny's going to have this advantage? Yeah, would definitely think so. It's also very easy to always play aggressive as the Tiny 2, because your Avalanche removes 6 of those instances of refraction whenever he does get the levels up on Miracle. Just gotta make sure you don't need too many side blades as Topson, because you are very low armor, of course. Again, Notail. He's going to take quite a bit of damage in response this time with the Ghost and the Anchor Smash. Trying to run away with the Tango. He's going to look for the neutral creep tonight. Not going to get it. GH able to get that first blood, taking down Notail. Notail, for the most part, still able to do his job with regards to pushing them away from Anna, but obviously wants to make sure that he doesn't feed himself away too many times. Otherwise, that is when you are going to see that dual lane up top get the level. It's all about the space, and we look at OG's draft. They're about the late game. You look at Liquid's draft, they're... That Spectre. Yeah, and when OG's having such a good time in some of these matchups, they're going to be very happy. The mid lane continuing to be very much in Topson's favor. 15 for 8 against the 9 for 0. Miracle is going to look to fight back. Topson getting rather low. Miracle looking for the angle. He does find the angle, but it isn't quite enough damage. Topson will be able to walk away. He's going to have to TP to base, though. That's pretty huge there. Miracle, after having a pretty rough start in the laning phase, the 8 denies on the Tiny, pushes him out. Topson getting a bit too over-aggressive there. So we see Weehaw is going to be hitting this level 3, level 4. Kuroki has absolutely been moving away from the lane a lot to ensure that the Meepo gets that extra experience. And he's grabbing his creeps. He's actually grabbing the Ogre Frostmage this time just for the armor. 15 armor on Meepo to soak some of that bullying that comes out from Seb as well as JerAx. But they're glyphing the wave, and they want to continue this pressure. Farm between Seb and Wee, very even at the moment. They're both. It is your ban. Five seconds. Mirana ban hai, position 4. Zeus hurt 10 seconds. 5 seconds remain. Position 4.
It is your turn to pick. Nature's prophet. Diego Tango. PA. Offline draw. Really. Hello. Open कर. No. You go live when you don't have thousands cover. Switch account. Mindless. You loser. लाइव जाने के लिए कब से 1000 सब्स लगने लगे? I guard the wooded ways. TA, do you want one more tango? Prepare for battle. Nature calls. Give you one. Leaving. Thanks. It's an open secret, obvious to all, that this one is in the bag. In sylvan shade. By hidden paths. Just 30 seconds now. Is it necessary? What drum sounds this beat of war? With a wild spirit. En route. 15 seconds. Keep distance. By the wilds. Void. Remember, the international spirit lives in us all. The season arrives. This is the very definition of first blood. First blood. They sing the song of death. On my way. By my shaggy bark. In green, I go. Naturally. Branch out. Void of For the trees. full aggro void. Yes. Through shady lanes. So I go.
Yes. In green, I go. हाँ काय करतोय वर्ल्ड यार. En route. So I go. Autumn comes too soon. Again, the sun warms my limbs. Go green! Limber up. Nature's ferocity. Starfire missing. Naturally. Take the range. My hidden paths. Don't miss it. Green wrath. Nature calls. By leaf and limb. यार. With a wild spirit. Uproot you. Green is good. Focus on last hits. By my shaggy bark. Ah, the sun in my leaves. Your top tower is under attack. On my way. Look to your top tower. Through shady lane. The enemy attacks your top The tower. wild is calling. Yes. In sylvan shade. Leaving. Yes. In green, I go. Radiant's courier has been killed. All who step onto the battlefield risk this ultimate price. Time is first. I sprout anew. Blessings. So I go. Pull roots and run. Eight wide. Attack. Nature calls. By my shaggy bark. Your middle tower is defending itself. Through shady lanes.
Oh, too bad. En route. The enemy attacks your middle tower. In sylvan shade. Uproot the foe. Verdant fury. Ah, what golden green. And naturally. Masterpiece. Yes. Come, come. On my way. With a wild spirit. No. The veiled oracle chose you. Is it spring already? Look to your top tower. As that tower stood against the rising tide. Green wrath. Your top tower is under attack. My hidden paths. Your top tower is under attack. On my way. Look to your top tower. The wild is calling. Your top tower has been overcome. Warriors of the wood. Yes. Naturally. For the trees. So I go. By my shaggy bark. Nature calls. Leaving. The seeds of fortune. You've lost a bottom tower. With a wild will. Killing spree! Branch out. Your middle tower faces a terrible test. With me. With a wild spirit. My leaf and limb. En route. By hidden paths. Attack! Through shady lanes. Ancient stuck for you. Uproot the foe. Come to me. Look to your bottom tower. The enemy attacks your bottom tower. Wild is my way.
wild. Your middle tower is under attack. Escape and find absolution. Dominating! I am glad to leave that place. Pointless effort. In sylvan shade. Mega kill! Double kill! Killing spree! Nature's ferocity. Come, come. Verdant fury. The wild is calling. I was dead already. For heresies unknown, the temple decreed your death. In sylvan shade. The radiant glyph is now active. Through shady lanes. Mysteries renew me. Nature's ferocity. Nipped in the bud. Uproot with me. On my way. Weep not for me. Out of the vein. By my shaggy bark. Killing spree! Double kill! The enemy attacks your middle tower. Now you must decide what comes next. Verdant fury. Your middle tower faces a terrible test. Dire structures are fortified. Wild is my rhythm. How sweetly the sap flows. Yes. Leaving. Time is money. Warriors of the wood. Attack. Naturally. Go green. In green, I go. Uproot and after them. My leaf and limb. Nature calls.
So I go. Mega kill! My hidden paths. Middle tower is under attack. I'm the one. Branching out. With a wild spirit. En route. Pull roots and run. Branch out. In sylvan shade. So I go. Blown out on a cold wind. You are a sacred target. Leaving. Naturally. On my way. By my shaggy bark. With a wild spirit. Arey dude, let me stack first. For the trees. In green, I go. Unstoppable! En route. A doodle for the ages. Invisibility. My hidden paths. Even in death, you'll not see beyond the phantom veil. Nature calls. Blessings. Bottom tower is under attack. Nature's ferocity. Through shady lanes. Yes. Yes. Uproot you. Radiant structures are fortified. Green wrath. Yes. So I go. Killing spree! On my way. By my shaggy bark. My hidden paths.
Check here. Nature calls. Naturally. Wild is my way. Come to me. Yes. The mysteries renew me. Uproot the foe. Go green. Through shady lanes. तू अमंग अस घेणार आहे का? नाही रे माझ्याजवळ आता पैसे नाहीये मी डोटाचा पास मध्ये घातलेत थोडे. हाँ अच्छा ठीक आहे. पण माझ्या मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल आहे ते मी मोबाईल वर For the trees. हाँ अरे सध्या एम्युलेटर वर मी मोबाईल वर चालत होतो मित्रांबरोबर खेळला. I go. ते लोक क्रॅक व्हर्जन ने खेळत होते मी मोबाईल वर स्मूथ चालत होता 250 पिंग मध्ये. हो अच्छा म्हणजे ते लोक क्रॅक्ड पीसी व्हर्जन With a wild spirit. ते लोक आणि मी मोबाईल वरून खेळत होता त्यांच्यासोबत सेम. A bit of green. In sylvan shade. En route. Dominating! Mega kill! Double kill! Yes. Time grinds even mountains. Nature calls. Short my one kill. Your middle tower is under attack. Unstoppable! Bird and fury. I have orchard With ready. a wild spirit. Come, come. By my shaggy bark. Leaving. This is the real deal! The enemy's top tower brought to ruin. Your middle tower is under attack. The wild That is which falling. protects also requires protection. Your middle tower is under attack. Through shady lanes. Who fells me? Swiftly to the temple's defense.
I could not bear to be away from the sacred woods. A mere detour on the road to victory. Snip. Radiant structures are fortified. Yes. Dire's courier has been killed. Service of another's cause. Monster kill! Autumn leaves for a deathbed. Your middle tower is under attack. Nature's guardian returns. In sylvan shade. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. In green, I go. I answer the wild's call. I'm under attack. God! Nice. Killing spree! I do not care to see that dark gray place again. Your bottom tower is under attack. Nature's way. Your bottom tower is En under route. attack. The seeds of fortune. So I go. Branching out. Your bottom tower is under attack. By hidden paths. Where bottom tower has fallen. Drawn. Uproot you. By leaf and limb. For the trees! Green wrath. Naturally. By the wilds. The sacred throne awaits. Death at my hands is an honor.
Light, air, and water. I've seen the world without them. With a wild spirit. Brand, uproot and after them. Verdant fury. Roshan has fallen to the Radiant. Naturally. Nature calls. On my way. Your top tower is under attack. Leaving. I will rise next season. Double kill! Double kill! Your middle tower is under attack. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks are under attack. When you let the enemy cut through your center, your middle barracks has fallen. Your middle barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Through shady lanes. Your bottom tower is under attack. Sparks that may blaze into a skirmish. Your bottom tower has fallen. Nature's Your middle tower is under attack. Will once middle barracks has fallen. This? Warriors of the wood. In green, I go. Yes. Limber up. Dominating! Mega kill! Double kill! The seeds of Killing spree! Your middle tower is under attack. With me. Uproot the foe. Your middle tower is under attack. Bear witness and tremble! In sylvan shade. Your middle tower has fallen. I'll just take a cut. Your middle tower is under attack. By my shaggy bark. Your middle tower has fallen. The end is already under attack. So I go.
my hidden paths. Dominating! Your ancient is under attack. All right. Bear Let's settle this witness like and civilized tremble. killers. Defend your ancient to the very end. With a wild spirit. Radiant to the single match champion. Cut down in my... क्लॉक हो गया, लिच हो गया, ट्री एंड पुगना गायरो ओरेकल हो गए। Any good match going on? In drafting, let's see. चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मैच देखो तब तक। Radiant's turn to ban. Ten seconds remain. Radiant's turn to pick. Dire's turn to pick. Behold the horn of Magnus. Ten seconds. 5 seconds. Radiant's turn to pick. Send.
10 seconds remain. 5 seconds remain. Dyer's turn to pick. Rubik. 10 seconds. It is Dyer's band. Zeus. It is Radiant's band. 10 seconds remain. 5 seconds. It is Dyer's ban. Ten seconds remain. Radiant's turn to ban. Dyer must choose. Ten seconds. 5 seconds remain. Radiant's turn to pick. Juggernaut. Select your hero. Make the ultimate choice.
个没有感情的刷钱机器。Prepare for battle. Let's do this! Lone Druid as always. चला रे बंद कर दो.